We'll begin today's session, inshallah. Today's is the ninth session. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. We were discussing about the grandchildren of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hassan radiallahu anhu. Hassan in the eyes of his father. History has known many sons who respected their fathers. Hassan was distinct in that his father respected him too. यानी आपने हिस्ट्री में देखा होगा कि बहुत सारे रिस्पेक्टेबल सन्स होंगे अपने फादर्स के लिए, लेकिन हसन रदी अल्लाह अन्हु की खासियत ये थी कि उनके फादर भी उनको रिस्पेक्ट करते थे. One day his father Ali radiallahu anhu wanted to hear him speak to an audience, but he said he was shy to speak in his father's presence. Then Ali radiallahu anhu got up and found a place to sit where Hassan could not see him, and he began to address the audience and delivered an awesome speech. Ali radiallahu anhu was impressed with his son's speech. When the two met, Ali radiallahu anhu said to him, "They were offsprings one of the other, and Allah hears and knows everything." By referring to this ayah, Ali radiallahu anhu expressed satisfaction over his son's progress. यानी now we being mothers, we can understand very well कि ऐसे कोई जब भी मौके आते हैं जब हम अपने बच्चों का टैलेंट एक्सपीरियंस करते हैं, may Allah Ta'ala make us those whose children becomes the coolness of their eyes. Ameen Ya Rab. So similarly, Hazrat Ali, when he experienced such occasion, beautiful words came out of his mouth. And this shows Hassan's radiallahu anhu's haya also. He was shy of speaking in front of his father. यानी उनकी respect, एहतराम और हया की ये एक मिसाल है. Anyways, he heard him speaking. And we all know that he possessed very distinguishing qualities. And they were all these people, they were very good orators. They used to speak very well. They had the power of speech. So subhanallah, the grandchildren also inherited this beautiful skill. And in the pages of history, how is he reflected? Let's just go quickly over that. He was only 7 or 8 years old when Muhammad sallallahu alaihi wasallam passed away. Within another 6 months, his mother Fatima also passed. He was still very young when Abu Bakr radiallahu anhu led the community. Now just imagine at a very tender age of 7 and 8, when his grandfather passed. And then after 6 months precisely, his mother also passed. And we discussed this in the previous sessions, that how difficult it is to survive without your parents being around. But anyways, all these pious people, they have suffered a lot. So looking at them, no wonder when you read their stories, you get inspired, because we are blessed. We are still so much in better condition. So at that point of time, Abu Bakr radiallahu anhu was leading the community. And Abu Bakr radiallahu anhu specifically instructed the community to honor Muhammad sallallahu alaihi wasallam's family. His attitude towards Hassan is moreover known from reports attributed to him. During his time, Umar also treated the house of Muhammad sallallahu alaihi wasallam well. Umar radiallahu anhu was the caliph after Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. So even he respected the household of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Umar radiallahu anhu's time marked the beginning of affluence for the Muslim community. Yani we have read it and we know it, that during the time of Umar radiallahu anhu, there was prosperity. The Muslim state had gained strength. The spoils of military campaigns enriched the Muslim state. He made use of the revenues to strengthen the state treasury and fixed regular stipends for Muslim subjects of the state. And he was a very wise person in terms of a statesman. और उन्होंने जहाँ जहाँ फाइनेंसेस लगना था, उन्होंने अपने हिसाब से उसको मिलिट्री को, स्टेट की ट्रेजरी को, सबको फिक्स किया. उसके बाद जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज थे, उनकी भी एक स्टाइपेंड फिक्स की, सैलरीज फिक्स की. Stipends were highest for the warriors of Badr.
जो बदर की जंग में जो वॉरियर्स थे उनकी सबसे हाईएस्ट पे थी. Even though Hassan and Hussein were not even born at the time of Battle of Badr, they were given the same stipend as those who fought at Badr. That is 5,000 dirhams annually. Yani ye, this shows the soft corner and the consideration for Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's family. So even though they were not born during that battle of Badr, but unko wo stipend milta tha, which was a very high amount of 5,000 dirhams annually. It was the same amount as that fixed for Umar himself and Ali radiallahu anhuma himself. यानी उनके लिए जो फिक्स था स्टाइपेंड, इन बॉयज के लिए भी वही फिक्स किया था उन्होंने. The register in which stipends were listed began with the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam's uncle Abbas ibn Abdul Muttalib, followed by Ali radiallahu anhu and Hassan radiallahu anhu. Such was Umar's treatment of the house of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We can see how they have honored, how they have respected. Hassan was a youth in Uthman's time. He too treated Hassan as well as all other members of Muhammad sallallahu alaihi wasallam's household with utmost respect and love. और इन्हीं के टाइम में Hassan radiallahu anhu participated in a battle for the first time. वो अपनी youth में थे, अपनी जवानी में थे. Historians note that he participated in the campaign to Tabaristan that was led by Sa'id ibn As in 30 after Hijri. The assassination of Uthman is a dark chapter in the history of Islam. When his house was besieged by the rebels, Ali radiallahu anhu appointed Hassan and Hussein to guard Uthman's residence. They bravely protected and were injured while resisting the rebels. अभी आप देखेंगे कि in spite of becoming very strong and an established state, yet जो leaders होते थे उनकी जान को हमेशा खतरा रहता था. उसी तरीके से उस्मान रदियल्लाहु अन्हु was under the threat. तो उनके घर की सिक्योरिटी ये दोनों भाइयों के हवाले थी. And उन्होंने बखूबी ये रोल अदा किया. And while doing this, they even got injured. The rebels could not break into his house from the door that was guarded by Hassan and Hussein, so they jumped over a wall and killed Uthman while he was reciting the Quran. Ali took charge of the Muslims' affairs after Uthman radiallahu anhu was assassinated. Now, after Uthman radiallahu anhu, the one who was appointed was Ali radiallahu anhu. And during his caliphate, several tragic events happened. Misgivings between different parties among Muslims resulted in a tripartite civil war during which a large number of Muslims were killed. इनके हजरत अली के एरा में, अली रदियल्लाहु अन्हु के एरा में बहुत सारे ट्रैजिक इवेंट हुए थे, जिसमें से एक very sad event of the civil war happened, जिसमें बहुत सारे Muslims killed हो गए थे. Unity among Muslims was dealt a major blow. यानी among the Muslims group only disparity हो गई. Hassan fought shoulder to shoulder with his father in the battles of Camel and Siffin. Being hesitant to fight fellow Muslims, his participation was minimal though. यानी अभी आप सोचें, इसमें एक अजीब सी कैफियत है, एक अजीब सी mixed feelings थी. He wanted to participate also, at the same time he was very hesitant. Why was he hesitant? Because ये अब आप दुश्मन के खिलाफ नहीं लड़ रहे, आपका दुश्मन आपका खुद का मुस्लिम ब्रदर है. तो he kept his participation to the minimal. It's a very, very odd and awkward feeling to fight your own clan. In Ramadan 40 after Hijri, Ali radiallahu anhu was assassinated by Abdurrahman ibn Muljam, one of the Khawarij. After his assassination, Hassan radiallahu anhu was sworn in as a caliph. अब इनके बाबा भी जो है वो भी assassinate हो गए. फिर Hassan radiallahu anhu was given the caliphate. He was not universally recognized, however. Only 4 months after he was sworn in as a caliph, he took supporters from Iraq to fight Muawiyah, who enjoyed support in Asham. Few months, यानी 4 months ही उनके sworn in को हुआ था, और उन्होंने अपने supporters को इराक से लिया to fight Muawiyah, who was very comfortable in Asham. The two sides faced each other somewhere between the Tigris and Euphrates.
It is believed that the city of Baghdad was later established at the same site, somewhere in Iraq. Hassan radiallahu anhu was a peace-loving, kind-hearted person who realized that the two sides would not surrender until they were completely destroyed, and that infighting was invariably harmful to the community. He readily accepted the other party's peace offer. The details of this peace deal are available in historical works and hadith. यानी कि बहुत famous किस्सा actually. If you get a chance to read about this, definitely read what happened actually in Karbala and how things happened. Dark chapters of Islam, I would say, which resulted in the major disparity between the Muslim community. But kabhi aapko chance lage, inshallah, to do read about that. It's always nice to enhance your knowledge. We have to increase our knowledge. And we keep asking Allah subhanahu wa ta'ala to provide us ilman nafiya. So I urge you all, and I every time encourage people that keep on learning. Every day should be better than your yesterday. So a bit of a small knowledge increase, even a small marginal progress is a progress. So gaining knowledge should be a lifelong struggle from cradle to grave. May Allah make us among those who are seeking nafe knowledge. Ameen ya Rab. Now, Bukhari, for example, has dedicated a section to this peace deal in the Book of Reconciliation, Kitab as-Sulh, of his voluminous collection of hadith. He reports that the huge army of Hassan radiallahu anhu marched towards the forces of Muawiyah. Amr ibn al-As was the commander in Muawiyah's army, expressed concern to Muawiyah that the hosts accompanying Hassan would not turn their back until they killed the opponents. आप देखें उनका determination और उनका focus कितना होता था कि they know very well when they start to march or when they have made plans to attack, so वो पलटेंगे नहीं जब तक कि वो अपने enemies को destroy ना कर दें. That is called steadfastness, that is called istiqama, that is called focus and determination. आप कोई भी काम करें, कोई भी छोटे से छोटा project लें, be focused on it, be determined, and you will see the difference. कोई भी चीज हाफ हार्टेडली जब होती है, विदाउट खुशू, विदाउट फोकस, उसमें वो बात और वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते. There has to be determination, there has to be consistency, there has to be persistency. These are the qualities to achieve your target, bi'idhnillah. Similarly, the opponents know कि उनका determination कैसा है. Muawiyah responded by expressing concern over the number of women who would be widowed and children who would be orphaned if the two sides fought. यानी दोनों ही पार्टी स्ट्रॉन्ग है और ज्यादातर जंगों का नतीजा जो है वो यही होता है कि बहुत सारी औरतें विधवा हो जाती हैं, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं. इसीलिए सुलह जो है वो any day is a better option. Thus he sent Abdurrahman ibn Samra and Abdullah ibn Amir with a proposal for peace to Hassan radiallahu anhu. The two sides sat down to decide the terms of the treaty. Following are some of the terms of the peace deal. यानी दोनों ने agree कर लिया, अब वो अपनी peace treaty के जो है वो points decide कर रहे हैं. That everyone shall be guaranteed security of life, that no Iraqi will be detained out of enmity. यानी सबको जो है वो security of life guarantee देना है, उनको भी यानी मिलनी चाहिए, and कोई भी इराकी जो है वो अपनी country से detain out नहीं किया जाएगा enmity की वजह से. That the tax collected from Ahwaz will be reserved for Hassan, who will be paid 200,000 dirhams annually. एक जगह है अहवाज, वहां से जो टैक्स कलेक्ट होगा वो हसन रदियल्लाहु अन्हु को दिया जाएगा, जो अमाउंट करेगा 200,000 dirhams. That Banu Hashim will be given priority over Banu Umayyah in stipends and assistance. अभी ये जो दो क्लैंस है, एक बनु हाशिम और एक बनु उमैया, तो बनु हाशिम को प्रायोरिटी दी जाएगी over Banu Umayyah. Muawiyah abided by these terms. The wisdom on the part of the leadership from both sides bore fruit in the form of unity among Muslims and political stability. तो दोनों पार्टी agree कर गई mutually by playing a wise role in reconciling with Muawiyah. Hassan radiallahu anhu lived up to Muhammad sallallahu alaihi wasallam's prediction that his grandson was going to facilitate reconciliation between two parties among
Muslims. तो यानी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हयाती में प्रेडिक्ट किया था कि ही विल बी रिस्पॉन्सिबल कि दो बड़े ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स को, दो पार्टीज को वो ज्वाइन करेंगे. Fellow Muslims were very happy with Hassan radiallahu anhu's wisdom and they held him in high esteem. The year was declared as al-Jam'ah, the year of reconciliation and unity among Muslims. So this was a great achievement and one of the very wise moves. Hassan radiallahu anhu's days and nights were spent in the remembrance of God. अब आप सोचें, again point for us to note down. He is a youth, young man, और उनका तर्ज अमल देखें क्या है. ना entertainment, ना comfort. Remembrance of Allah Azza wa Jal. He was known to help people in times of difficulties. Muawiyah once inquired from a resident of Medina about Hassan radiallahu anhu's routine. The person told him that he stayed in the masjid remembering Allah after Fajr prayers until it was sunrise. At that time, he would offer shuruk prayers. He would then be surrounded by tribal leaders for some times or elders for some times. Afterwards, he would visit the wives of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sometimes he would also take them gifts. After visiting them, Hassan radiallahu anhu would return home. यानी आप देखिए वो एक दिन में सुबह से लेकर मे बी नून तक के कितने नेकियां और अजर वाले काम कर रहे हैं. पहले फजर के लिए ही इज प्रेइंग, उसके बाद ही इज कीपिंग हिमसेल्फ बिजी इन जिक्र अस्कार अंटिल इशराक, देन ही इज प्रेइंग इशराक. फिर वो ट्राइबल लीडर्स एंड एल्डर्स आ रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन, उनके प्रॉब्लम सुनना एंड उसके बारे में हल पता करना. फिर उसके बाद ही यूज्ड टू विजिट, फिर सिला रहमी, अपने रिश्तेदारों के घर जाके मिलना, उनके लिए गिफ्ट ले जाना, एंड फिर वो अपने घर आते थे. इमेजिन व्हाट अ ब्यूटीफुल रूटीन. The state of Hassan radiallahu anhu's taqwa and humility. Once he saw a person who expressed excessive love and praise for the family of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He admonished him for his excess and advised him to love the house of Muhammad sallallahu alaihi wasallam for the sake of Allah, to love them when they obeyed Allah and to detest them when they disobeyed Allah. यानी अब आप इसमें देखें कितनी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगेन हमारे लिए कि हम लोग जो है जो हद से ज्यादा तजावुज कर जाते हैं. वी एग्जैजरेट समटाइम्स इन लव एंड रिस्पेक्ट एंड इन ओबेइंग और फॉलोइंग समवन. देयर आर सम सेक्ट्स अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ जो इन चीजों में मुब्तला हैं कि इंस्टेड ऑफ बिलीविंग इन अकीदा तौहीद, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द गुड बिलीवर्स एंड फॉलोइंग देयर फुटस्टेप्स, दे स्टार्ट वर्शिपिंग देम. यानी इतनी एक्सटेंट पे उनके एहतराम करने पहुंच जाते हैं कि इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू शिर्क. सो अगेन ही इज सो वाइज. जब कोई आके उनके सामने उनकी फैमिली को एक्सेसिवली प्रेज कर रहा था, ही स्टॉप्ड हिम, ही एडवाइज्ड हिम टू लव द हाउस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा व जल. यानी उतनी चीजों में ओबे करना है जिनमें उन्होंने ओबे करने को कहा है, और जिन चीजों को मना कर दिया गया वहां पे मना हो जाना है. And to detest them when they disobeyed Allah Azza wa Jal. Yani he is again bringing the focus to Allah Azza wa Jal. He is changing the focus from his family to Allah Azza wa Jal. So ये है करने वाले काम. That how do you guide people? आप अपनी तारीफ और अपनी फेम के पीछे नहीं भागेंगे. आपने हर जगह पे हर सूरत हाल में लोगों को जो है वो अल्लाह के साथ कनेक्ट करना है, अपने साथ नहीं. बिकॉज इसमें आपका जाती मफाद नहीं है. आपका जो काम है वो सिर्फ मैसेज पहुंचाना है. एंड इफ somebody is getting impressed by you and is trying to get under your influence, connect them to Allah Azza wa Jal. The person replied, why should you worry? After all, you are the offspring of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his family. Upon which he replied, if association with Muhammad sallallahu alaihi wasallam were to avail anything in the absence of obedience to Allah, it would have benefited our ancestors and other family members of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beautiful wise reply. उनको जब वो आदमी कह रहा है कि आपको फिक्र क्या है, you तो belong to the same family of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He said, अगर सिर्फ उनके एसोसिएशन से ही हमको फायदा पहुंच गया होता तो हमारे एंसेस्टर्स जो थे उनको भी इस टाइप का फायदा पहुंचना चाहिए था. जो लोग उनकी फैमिली में भी वी नो वेरी वेल जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को अग्री नहीं किए थे, तो उनको ये वास्ता काम नहीं आया. By Allah, I fear Allah may punish the disobedient among us twice as much, for we are the offsprings of the messenger. यानी अगर हम यानी वो he's trying to explain the tougher side of being the
family member from the messenger's household. He's saying कि हम लोगों के ऊपर और ज्यादा मुश्किलात है, punishment की double हो जाएगी, because we belong to the offspring of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likewise, I hope Allah would doubly reward those among us who obeyed him. Fear God with respect to us and say of us only that which is true. This is good for you as well as pleasing for us. यानी अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने जो है कभी भी इस चीज की ताकीद नहीं की कि हमारे तरफ आप फोकस करो या start worshipping us or start making dua through us, या हमें वसीला बनाओ या हमें ये एहतराम दो. It is some ignorant people जिन्होंने उनको वो हद से ज्यादा exaggerate किया और उस ओहदे पे लेकर गए. वरना any time and every time this pious people always connected people to Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Hisham al-Qanad was a trader who bought goods in Asham and sold them in Medina. He reported that Hassan radiallahu anhu used to argue a lot with him concerning the prices of the merchandise. He bought things after much bargaining but then gave them away to people for free. यानी अभी उनका और इनकी हम हिकमत देख रहे हैं, हम देख रहे हैं हाँ what kind of a personality he was, क्या किया करते थे. एक अबू हाशिम अल-कनाद एक ट्रेडर था जो शाम से चीजें लाता था, तो ये उनके साथ बहुत बार्गेन करते थे, आर्ग्यू करते थे और फिर अच्छा डिस्काउंट लेकर ही यूज्ड टू बाय थिंग्स फ्रॉम हिम एंड फिर लोगों में फ्री तकसीम किया करते थे. Abu Hisham found it very surprising. If Hassan was so desperately wanted to save money as he bargained, why would he give away purchased goods to others? He expressed his astonishment to Hassan, who memorably replied, "A believer should not be gullible. A believer should not be gullible," he said. अब वो सरप्राइज थे कि भाई ये इतना ज्यादा खरीदते हैं और इतना ज्यादा हमारे साथ बार्गेन करते हैं. बिकॉज नॉर्मली आप देखें, अगेन हमारे लिए लेसन है, हम लोग कब ज्यादा बार्गेन करते हैं? जब हमें अपने पैसे बचाने होते हैं. वो पैसे बचा कर हम क्या करते हैं? हम फिर से अपने ऊपर ही खर्चे कर लेते हैं. बट इनका तर्ज अमल क्या था? इनका तर्ज अमल ये था कि वो उससे जो है वो डिस्काउंट लेकर ज्यादा चीजें खरीद कर लोगों में बांट देते थे. एंड the meaning of gullible would be easily persuaded to believe something. Yani, he should not easily get influenced to believe something. अब उसका exact उर्दू वर्ड या हिंदी वर्ड मुझे नहीं समझ आएगा, but I hope I'm clear in that कि a believer has a certain set of belief, तो वो किसी भी चीज से influence जल्दी नहीं हो जाता. He has to do his tahqiq. He has to have his own set of ideas. He doesn't get persuaded or influenced or believe in something very soon. So, एक simple सा statement उन्होंने बोल के उसको explain कर दिया. How wise and concerned Hassan radiallahu anhu was. Nowadays, we see rulers making reckless payments of public money to cheat, but not spending enough to improve the conditions of their subjects. यानी या तो हम लोग देखते हैं कि हुक्मरान जो है वो अपने ऊपर खर्चे कर रहे हैं, अपनी पर्सनल चीजों के ऊपर खर्चे कर रहे हैं, और फिर उसके बाद वो बहुत रेकलेस होते हैं अपनी एक्स्ट्रावेगेंस में, अपने शोगिरी में, बट वो अपनी रियाया के पीछे उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं खर्चा करते या कंजूसी उसमें करते हैं. The grandson of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, on the other hand, exercised caution in making payments to wealthy traders. यानी वो बड़ा ही समझ के किफायत शारी से खर्चा किया करते थे wealthy traders को, but बहुत गनी थे even if he has to give from his own pocket. जब poor and needy subjects, poor और needy उनकी रियाया उनके सामने आती थी, तो he was very calculative with the rich traders but very generous with the poor and needy. He was extremely generous. After all, he was raised under the tutelage of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was very generous himself. यानी आप देखें कि आपके बच्चों पे या आपके ऑफस्प्रिंग्स पर उनकी जो कैरेक्टर और जो पर्सनालिटी बनती है, वो किस तरीके की सोच रखते हैं, वो किस तरीके के उनका एटीट्यूड है, किस तरीके की उनकी बोली है. ये आप देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या रिफ्लेक्ट करती है? ये रिफ्लेक्ट करती है कि उसके आसपास जो बड़े हैं, उसके आसपास का जो माहौल है वो क्या है.
जैसी बड़ों की बोली होगी वैसी बच्चों के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। जैसा बच्चे देखते हैं कि हमारे बड़े का जो तर्ज अमल है वो उसको कॉपी करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे। सो देर इज नथिंग वेर वी कैन से कि जो बच्चे हैं वो कुछ बाहर से इन्फ्लुएंस लेते हैं। जो फर्स्ट इंस्टीट्यूट है वो घर है, और घर के अंदर आप अगर अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, आप उनसे सच बुलवाना चाहते हैं, आप उनके अंदर तमीज और आदाब डालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो अल्लाह की तरफ माइल हो, तो मेक श्योर कि आप जो कुछ अपने बच्चे और अपने औलाद के अंदर चाहते हैं आप उसको उसके सामने डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। एंड नॉट जस्ट डेमोन्स्ट्रेट, दिस हैज टू बी योर ट्रेट्स, यानी ये जो है ये आपका तर्ज अमल होना चाहिए। आप चाहते हैं आपके बच्चे नमाज पढ़ें, आप पढ़ें। आप चाहते हैं वो सच बोलें, आप सच बोलें। आप चाहते हैं वो जनरस और काइंड हो, आप जनरस और काइंड हो। बिकॉज चिल्ड्रन लिसन विद देयर आईज, वो उनकी आंखों से जो देखते हैं वो उनके दिमाग में रजिस्टर होता है और धीरे धीरे वो उनकी पर्सनालिटी बनती है। इसलिए कहते हैं कि बच्चा की पैदाइश से लेकर अराउंड 4 to 5 to 6 years बहुत क्रूशियल है। दिस इज गोइंग टू मेक द पर्सनैलिटी ऑफ वॉट दैट पर्सन इज गोइंग टू बी इन द फ्यूचर। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो वो कोई जो माँ बाप बने हैं या ग्रैंड पेरेंट्स बने हैं, तो ये आप सोच लें, पेरेंट्स की खास तौर से मैं कहूंगी कि ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को एक ऐसा माहौल दें जिससे कि हम ये इंशाल्लाह सोच अपनी हम लोग बना लें कि ये औलाद हमारे लिए बेइज़्निल्लाह सवाबे जारिया बनेगी। लेकिन वो माहौल घर का क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो जस्ट सी कि आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट ना करें, बिकॉज दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन इन द लिटिल माइंड्स। और वो कंफ्यूजन फिर उनकी एग्रेशन में और उनके social connection and behaviors में reflect करेगा। So just make sure, again, as usual with our every session, we put a contemplation or some pondering or some activity. This time I'll tell you to just sit back and think, क्या आप अपने औलाद को एक अच्छा माहौल दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो take few steps back, contemplate and rectify it. May Allah help us to rectify our affairs. So he was very generous. And Muhammad ﷺ never feared penury while spending on others. This part of Hassan's radiallahu anhu's character has been recorded widely in works of history and biographies. एक बात आप जहन में रखें कि कोई अगर गनी होता है और कोई अगर बखील होता है, तो ये दोनों भी चीज़ आप फेक नहीं कर सकते. It can be easily recognized. You cannot be stingy and express yourself to be very generous and vice versa. Similarly, हर जगह पर historians and biographers ने इनकी generosity के किस्से जो है वो नोट किए हुए हैं. यानी he is known to be a very generous person. Muhammad ibn Sirin, for example, notes that Hassan radiallahu anhu once gave 100,000 dirhams to someone in one go. On another occasion, he heard someone praying to Allah for 10,000 dirhams. Hassan radiallahu anhu went straight to his home and asked his servant to deliver 10,000 dirhams to this person. यानी बड़ी बड़ी अमाउंट भी वो एक झटके में दे देते थे वेर रिक्वायर्ड। जैसे कि एक बंदा उन्होंने सुना कि वो अल्लाह से दुआ कर रहा है कि उसे 10,000 दिरहम्स चाहिए, तो उन्होंने घर जाके अपने नौकर को कहा कि इस बंदे के पास 10,000 दिरहम्स पहुंचा दो। On another occasion, he was passing by an orchard when he saw a black slave holding a piece of bread in which he fed himself and a dog at the same time. Hassan radiallahu anhu asked him why he did that. The slave said he could not eat alone and leave the dog hungry. Hassan radiallahu anhu asked him who his master was and who owned the orchard. The slave named Aban ibn Uthman as his master. Hassan told him to stay there until he returned. After a while, Hassan came back and told the man that he had acquired him and the orchard from the master. The slave then asked Hassan radiallahu anhu what he could do for him. Hassan radiallahu anhu replied, I set you free for the sake of Allah and this orchard is yours too. देखें आप, अभी एक स्लेव था, उन्होंने वो एक फ्रूट का जो ऑर्चर्ड है उसमें से पास कर रहे थे. ही सॉ अ स्लेव, वो एक ब्रेड जो है अपना खुद खा रहा था और एक कुत्ते को भी खिला रहा था साथ में. तो उन्होंने इंक्वायर किया कि आप क्या कर रहे हो, तो कहते हैं कि मैं अकेले नहीं खा सकता और उसको भूखा नहीं छोड़ सकता, सो आई एम फीडिंग हिम बोथ. फिर उन्होंने इंक्वायर किया कि आप कौन हो, ये ऑर्चर्ड किसका है. उन्होंने बताया कि ये अबान इब्न उस्मान का है. तो उन्होंने कहा आप यहीं पर बैठो जब तक मैं आ नहीं जाता हूँ. वो उनके पास गए, वो ऑर्चर्ड भी खरीदा, वो स्लेव का भी अमाउंट पे किया और फिर लौटे. फिर स्लेव ने उनसे कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. तो उन्होंने कहा आई फ्री यू
अल्लाह की खातिर, और ये ऑर्चर्ड भी आपका है. The slave now free was so delighted that he said, for the sake of Allah, in whose name you have given me this orchard as a gift, I reserve it for the needy. उसने आगे क्या किया, वो खुद कितना जनरस था वो स्लेव. जब उसे पता चला कि वो फ्री हो गया, ये ऑर्चर्ड भी उसके नाम पर हो गया, तो उसके अंदर कोई लालच नहीं थी. सुभान अल्लाह. एंड व्हाट ही सेड कि आई रिजर्व इट फॉर द नीडी, वो आगे और कोई नीडी के लिए भी वो रिजर्व कर रहा है. सुभान अल्लाह. ये चीजें हैं देखने वाली. हम लोग जो दुनिया के पीछे ये जो हकीर और बिला वजह की, जिसका कोई लेना देना नहीं हमारी जिंदगी में, उन चीजों के पीछे पागल होकर अपने जो करने वाले काम है उसे भूल जाते हैं. इंसानियत को पीछे रख के हम काम कर रहे होते हैं, हमारी इबादत को पीछे रख के हम काम कर रहे होते हैं. ये लॉकडाउन में आई एम श्योर मेनी ऑफ अस मस्ट हैव रियलाइज्ड कि जो गैर जरूरी चीजें हैं हमारी जिंदगी में, उसके बगैर भी हम बहुत खुश हैं, उसके बगैर भी हम जी सकते हैं. Alhamdulillah, time to contemplate, and I think we should thank Allah Azza wa Jal to have given us this time कि हमें ये ऐसा मौका मिला है कि हम बैठ के इस बारे में सोच रहे हैं, और वो सारी चीजें जो हमारा वक्त, हमारे पैसा, हमारी एफर्ट्स को जाया करता है, उसको हमने पीछे कर दिया है अभी. अल्हम्दुलिल्लाह, we are more focused, we are more family oriented, we are more into back to basics attitude. Alhamdulillah. On a occasion in Hassan radiallahu anhu's life, he divided his wealth into two equal halves and donated one half. यानी अभी हम में से कौन ये सब करता है, हम अपनी इनकम को लेकर उसको डिवाइड हाफ में करें और हाफ खुद रखें और हाफ डोनेट करें? डू वी डू दैट? हम लोग मुश्किल से 10% भी शायद बहुत कम होंगे जो अपनी इनकम से निकालते होंगे. May Allah make us among those who are able to distribute or give more of sadaqah to the needy, because in that lies barakah, in that lies actually आपकी जो salvation और जो आपकी कामयाबी है, जो आप आगे पहुंचा रहे हो, वो उस अमाउंट में डिपेंड करता है. तो अब आप सोच लें कि आपको क्या करना है, सिर्फ आई मी एंड माई सेल्फ, या कि दूसरे गरीब भी. बिकॉज एंड ऑफ द डे इट इज अल्लाह हु इज गिविंग यू दिस ब्लेसिंग्स. सो अल्लाह की दी हुई चीज में से उनका हिस्सा निकालना जो कि नीडी है, बहुत जरूरी है. Another lesson for us today and another activity for us today: make sure from your earnings, from your blessings, you give a share. No problem, begin with 10%, but start it. Even a small sadaqah matters a lot. Muawiyah once sent him 100,000 dirhams, which he immediately distributed among the people who accompanied him on that occasion. Each of them got 10,000 dirhams. On a different occasion, he learned that Usama ibn Zayd was ill. He went to visit him and found out he was very sad. Upon inquiry, Usama revealed that he owed someone 60,000 dirhams and was not able to repay the loan. Hassan told Usama that he would pay off the loan for him, and Usama was delighted to hear this. यानी ज़रूरतमंद के कर्जे अता करना. You see different मौके of earning the ajr or the pleasure of Allah Azza wa Jal. But हम लोग जो हैं, yes, we are doing it, but we need to do it more. We need to do it often. We need to increase the frequency and the intensity. Sayings of Hassan radiallahu anhu, it's quite famous actually, unke quotes bahut famous hai. Numerous pearls of wisdoms have been attributed to him. He said 10 things were indicators of a man's sublime character. What are these? A beautiful collection here. I will quickly read this. Being truthful under all circumstances. यानी हर एक सिचुएशन में सच्चा होना. Persisting on the battlefield. यानी being steadfast in the battlefield. Assisting one who is in need and asks for help. कोई जो मदद मांग रहा हो और ज़रूरतमंद हो उसकी मदद करना. Treating people in a good manner. अच्छे अखलाक से लोगों के साथ पेश आना. Reciprocating good treatment offered by others. जब कोई और आपके साथ अच्छा हुस्न सुलूक करे तो आप उसी तरीके से उनके साथ रेसिप्रोकेट करें, उसी तरीके से उनको जवाब दें. Connecting with near and dear ones. अपने नियर और डियर वंस जो करीबी हैं उनके साथ कनेक्ट करना. Treating neighbors well. अपने नेबर्स के साथ अच्छा बिहेव करना. Recognizing what is due to someone. अगर किसी के ऊपर हमारा कुछ बनता है तो उस चीज को रिकॉग्नाइज करना, एक्नॉलेज करना. Being hospitable. यानी आप जो है अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए तो उनकी अच्छी तरह से आप हॉस्पिटैलिटी एक्सप्रेस करें, उनकी देख रेख करें. Modesty, which he thought was the highest of these attributes. यानी एक हया का जो लेवल है वो एक ऐसी क्वालिटी है जो
सबसे हाईएस्ट दर्जा रखती है। हसन रदियल्लाहु अन्हु थॉट दैट बैड बिहेवियर वाज द वर्स्ट ऑफ मैन्स प्रॉब्लम। इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इधर, और आप लोग अपने दिमागों में अंडरलाइन कर रहे हैं इस चीज को, कि बैड बिहेवियर इज द वर्स्ट ऑफ मैन्स प्रॉब्लम। यानी हमारा दीन जो है ये सिर्फ इबादत का और ये फॉर्मेलिटीज एंड थिंग्स लाइक दैट का नाम नहीं है। हमारा दीन जो है उसकी जो असल है, जो एसेंस है, वो आप देखें इन टर्म्स ऑफ एनी सुन्ना और इन टर्म्स ऑफ एनी एक्टिविटीज जिसमें बहुत ज्यादा अजर है, विल वॉक डाउन टू वन पॉइंट विच इज गुड बिहेवियर, आदाब। अब ये आदाब जो है ये जिसने इंस्टिल किया वो ट्रू सेंस में कामयाब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा, वी हैव एक्चुअली लॉट ऑफ हदीथ गिविंग इम्पोर्टेंस टू दिस पॉइंट। मसलन somebody जो है वो बहुत 5 वक्त नमाजी है, पूरे नफली फास्टिंग्स भी चालू है, बट जबान का सख्त है, बिहेवियर का बहुत खराब है, अपने नेबर्स के साथ रूड है, अपने घर वालों के साथ उसकी जो है अच्छे रिलेशंस, कॉर्डियल रिलेशंस नहीं है। What do you think about that person? You think Allah is going to accept those ibadah? Yani, our religion comprises of good husn suluk and husn akhlaq. So remember that. आपकी जो कोशिश होनी चाहिए, you have to beautify your character. You have to beautify your matters. आपको अपने मामलात सुधारने पड़ेंगे। जिसके मामलात सही नहीं है, मसलन उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलीजन सही नहीं है। बिकॉज सिर्फ रूटीन में सुजूद करना एंड रोजे रखना विल नॉट हेल्प unless and until the people connected to you, the people around you, the people who have certain rights and obligations over you, जब तक वो आपकी पर्सनालिटी से मुतमईन ना हो। So make sure that we work on a daily basis on our behavior, on our adab, on our character. Very, very important. And the same goes for our children. We have to make sure कि हम उन लोगों को भी इस चीज की ताकत कंटिन्यूसली करें। I wouldn't say it is just one time affair education. It is a regular reminder sessions. Reminder for self and reminder for others. Hassan radiallahu anhu was known for his intelligence and quick wit. One day, he dressed and combed his hair after taking a bath and went out. On the way, he came across a Jew in tatters, irritated by the heat of the sun. He said to Hassan that his grandfather, sallallahu alaihi wasallam, said, "This world is a prison for a believer and paradise for an unbeliever." He then went on to express his concern that this did not seem to be the case. Hassan wore good clothing and enjoyed ease and abundance as if this world was a paradise for him. On the other hand, he, the Jewish person, was poor and desperate as if this world was a hell. Hassan quickly replied that the world was indeed a prison for a believer, considering that so many more of Allah's favor awaited him in paradise of the afterlife. And it was indeed paradise for an unbeliever, considering that so much more of Allah's wrath awaited him in the hellfire of the afterlife. ये किस्सा ऐसा हुआ कि एक बार हसन रदियल्लाहु अन्हु अच्छी तरह नहा धो के, अच्छी तरह ड्रेसअप होके, बाल बना के बाहर निकले, तो एक ज्यू जो बहुत, एक यहूदी बड़े बुरे हाल में था, गर्मी से परेशान था, तो उसने हसन रदियल्लाहु अन्हु को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात का याद दहानी कराई कि जो ये दुनिया है ये अनबिलीवर के लिए प्रिजन है, अनबिलीवर के लिए पैराडाइज है और बिलीवर्स के लिए प्रिजन है। तो उसने कहा तुमको देख के तो लगता नहीं है, तुम तो अच्छे हालात में हो, अच्छे कपड़े पहने हो, एंजॉय कर रहे हो और सारी दुनिया की नेमतें भी तुमको मिल रही हैं, और यहाँ पर मैं जो है वो बुरे हाल में हूँ, डेस्परेट हूँ, जैसे कि दुनिया मेरे लिए प्रिजन है। इस पर हसन रदियल्लाहु अन्हु ने रिप्लाई किया कि बेशक ये दुनिया जो है ये बिलीवर के लिए प्रिजन है, इन कंपैरिजन कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम बिलीवर के लिए आखिरा में बहुत सारी नेमतें हैं अल्लाह की जन्नत में, एंड इंडीड ये जो दुनिया है ये अनबिलीवर्स के लिए पैराडाइज है, कंसिडरिंग कि आफ्टर लाइफ में, आखिरा में उनके लिए जो पनिशमेंट है।
तो उस कंपैरिजन में ये चीज उन्होंने कही, यानी ही वॉज वेरी विटी और इंटेलिजेंट। उनके साथ कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पोज करे या कोई भी सिचुएशन आए, he would come up with a very wise comment. Another very beautiful quality. Hussein ibn Ali. अब second son की बात हो रही है. The second son of Fatima radiallahu anha and Ali was born in Medina on the third day of Shaban in 4th Hijri. He was 1 year younger than his elder brother. Ali radiallahu anhu wanted to name him Harb, but Muhammad sallallahu alaihi wasallam named him Hussein. Like Hassan's arrival, the birth of Hussein was a source of pleasure and an occasion of celebration for the entire family. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में अजान दी और तहनीक दी, और 7th डे को फिर उनके जो बाल है वो शेव किए गए और इक्वल अमाउंट ऑफ सिल्वर चैरिटी में दिया गया और अकीका पार्टी भी हुई. हसन हुसैन इज ऑल्सो रिपोर्टेड टू हैव क्लोजली रिजेंबल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इनकी भी जो रिजेंबलेंस थी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी, यानी दोनों की रिजेंबलेंस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी. द अपब्रिंगिंग ऑफ हसनैन. अभी हसन हुसैन को इक्वली इन अरबिक डायलेक्ट they are referred as Hasnan, the two boys. They were the source of comfort to their grandfather, the messenger of Allah, peace be upon him. Beside Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there were a lot of other people in Medina who loved them dearly, including their aunts and the wives of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In addition to other kin, the migrants and the native members of the Muslim community in Medina were very fond of them. यानी वो सभी के फेवरेट थे. Besides grandfather, the aunties and the wives अज़वाज मुताहरात और बाकी सारे जो मदीना में मुहाजिर्स आए थे, जो अंसार्स थे, वो सारे के सारे उनको प्यार करते थे. वो बहुत फॉर्चुनेट थे to have been trained and nurtured by the messenger of Allah himself सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. They were never fed by other than permissible means, यानी जो चीजें अलाउड एंड हलाल थी वो ही चीजें उनके पेट में जाती थी. एक बार एक पाइल ऑफ डेट्स था जो डोनेट किया गया था एज अ चैरिटी. तो ये दोनों छोटे थे, ये खेल रहे थे वहां पर, और एक ने वो एक खजूर अपने मुंह में डाल दिया. जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा तो इमीडिएटली उन्होंने उसके मुंह से वो निकाला और कहा कि ये परमिसिबल नहीं है फैमिली ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चैरिटी में से, सदके में से खाए. This incident demonstrates the superior training that the esteemed Hasnan received. हम लोग जो हैं बहुत केयरलेस हैं, कभी कभार थोड़ी सी इधर उधर कमी पेशी हो जाती है तो we say it's okay, बच्चा है खा लिया तो क्या हुआ, that is our attitude, right? But look at him. उन्होंने कहा कि एक खजूर भी उसके पेट में नहीं जानी चाहिए, उन्होंने इमीडिएटली निकलवाया एंड एक्सप्लेन भी किया. एंड इमेजिन वन थिंग, किड्स हम लोग सोचते हैं कि इनको अकल नहीं है, बट कभी ऐसे कुछ बात हो या कुछ इंसिडेंट हो, सो इट इज बेटर फॉर यू ऑल टू एक्सप्लेन देम. दे अंडरस्टैंड वेरी वेल. इनफैक्ट उनका एक अपना लेवल होता है एंड दे कॉम्प्रीहेंड थिंग्स, दे अंडरस्टैंड थिंग्स. तो you can sit back and explain your actions and your decisions and your things to them, and you will be surprised कि उनकी thinking और उनकी positivity और उनकी level क्या है. So never underestimate kids. उनके साथ बैठ के आप उनकी ये जो मामलात हैं वो डिस्कस किया करें, कोई मुश्किल नहीं है. Their household valued courtesy and love for the poor and the destitute. यानी generosity का जो मामला था वो बचपन से देख रहे थे कि वो गरीबों को लोग, उनके फैमिली मेंबर्स कैसे हेल्प करते हैं, और वो एरोगेंस बिल्कुल नहीं थे. फातिमा रदियल्लाहु अन्हा जो है उनकी भी तरबिया इसी बेस पर ही हुई थी कि बहुत जेनरोसिटी, काइंडनेस एंड नो एरोगेंस, बैलेंस पर्सनालिटीज थे. Hussein once passed a group of indigent people who were sitting on the ground eating. When they saw the grandson of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they humbly invited him to join them. अब आप देखें कुछ लोग जो हैं वो बेचारे जमीन पे बैठ के खा रहे थे, उन्होंने देखा कि ये मैसेंजर के पोते नवा से गुजर रहे हैं रास्ते से, तो उन्होंने उनको इनवाइट किया. ये अपने जो उनकी सवारी थी उससे उतरे, ग्राउंड पे स्क्वाट किया एंड देन उन्होंने खाना शुरू किया और ये कहा कि अल्लाह डज नॉट लाइक दोज हु आर एरोगेंट, यानी कोई उनके अंदर घमंड, प्राइड, अना नहीं थी. When they finished eating, he said to them, I just accepted your invitation. Would you now accept my invitation? तो उन लोगों को बहुत ऑनर्ड फील हुआ और उन्होंने कहा हम एक्सेप्ट करेंगे आपका इनविटेशन. तो उनको हुसैन brought them along to his place and memorably said to his wife Rubab, bring me all our savings, and then he distributed this among the group. यानी
he came to know, I mean he saw them कि वो पुअर लोग हैं, तो उनको अपने उनके साथ ज्वाइन होके उनको ऑनर किया, फिर उनको इनवाइट करके अनदर वे में ऑनर किया, और अपने घर से जो उनकी सेविंग्स थी वो पूरी लेके उनमें बांट दिया. हाउ कुड अ मुस्लिम नॉट अडोर दिस ग्रेट पर्सनालिटीज. आप देखें जो देने वाला हाथ होता है ना, उसकी एक अलग शान, एक अलग इज्जत, एक अलग रुतबा रहता है. तो दुआ ये करें कि अल्लाह ताला हमेशा हमें देने वालों में बनाए, कि हमारी जो हाजतें हैं वो सिर्फ अल्लाह पूरी करें. हमने अल्लाह के सामने अपनी नीड्स रखनी है, और हम जो हैं वो गरीबों को और औरों को देने वाले बने. हाउ कुड अ मुस्लिम नॉट अडोर दिस ग्रेट पर्सनालिटीज. एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है कि कैसे लोगों के दिल में अपनी मोहब्बत और इज्जत बढ़ाई जाए. जब आप जनरस होते हैं ना, जो बखील होता है वो हमेशा नेगेटिव रहता है लोगों के दिल में, लेकिन जो जनरस होता है ना उसके लिए बहुत इज्जत और प्यार होती है. Understandably, Hussein and all other members of the house of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam have a high status in the eyes of the Muslim. So there is no doubt that the household made countless sacrifices for Islam. They were the first to embrace Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's mission and subsequently suffered extreme atrocities for the sake of Islam. The rightly guided caliphs were eminently respectful and accommodating towards the family of the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam and those who were the earliest to embrace Islam. यानी no wonder कि इन लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी, इतनी जद्दोजहद की, इतनी परेशानियां झेली, एंड देन ऑफ कोर्स दे वर रिस्पेक्टेड, एंड उनकी जो एक लेवल था वो बना रहा, वो मेंटेन रहा. अल्हम्दुलिल्लाह. Priorities in Umar's court. Now we are coming down to a few incidents. Inshallah, if you give me some time, I just wanted to ask you if we can finish it today. Then we don't have to dedicate one more session tomorrow. अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें तो मैं इंशाअल्लाह 2:10 तक हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे. इज इट ओके? आप लोग या तो अनम्यूट करें या टाइप करें. इज इट ओके इफ वी कंटिन्यू टुडे, बिकॉज आई थिंक हार्डली कुछ चीजें हैं जो आज हमें डिस्कस करनी है, फिर इंशाल्लाह वी कैन क्लोज द बायोग्राफी टुडे. इज इट ओके विद यू ऑल? Yes, sure. Yes. Okay, I'm getting okays. All right, jazakallah khair. 3-4 के आगे messages and एक ने verbally बोल दिया. Okay. All right. During the time when Umar radiallahu anhu was caliph, Suhail ibn Amr stood at Umar's door along with the newly converted chiefs of Quraysh, waiting to be admitted to meet him. In the meanwhile, Suhaib al-Rumi, Bilal ibn Rabah, and other former slaves who had participated in the Battle of Badr also dropped by to meet Umar. When Umar came out, he ushered in Bilal and his companions to meet him. The leaders of Quraysh were enraged that the bunch of former slaves were able to get an immediate meeting while the chiefs had to wait. While they were discussing this with each other, Suhail ibn Amr, who was wise and eloquent, addressed them. अब ये चंद किस्से हैं. We will quickly go through them. Again, these are related also and not so directly related, but we will go through it because if the writer has placed these chapters, there is definitely some significance. तो ये हुआ कि एक बार उमर रदियल्लाहु अन्हु के वहाँ पर सुहेल इब्न उमर थे और कोई न्यूली कन्वर्ट चीफ्स ऑफ कुरैश थे, तो वो वेट कर रहे थे उनसे मिलने के लिए. एंड देन चंद स्लेव्स आए जो बैटल ऑफ बदर में उनसे पार्टिसिपेट किया था. एंड देन उन्होंने जो ये स्लेव्स और जो बैटल ऑफ बदर में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनको वो जल्दी से मिले. तो जो लीडर्स थे उनको ऐसे लगा कि स्लेव्स को हमसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है. इस पर सुहेल इब्न अमर ने क्या कहा? उन्होंने कहा, ओ माय पीपल, by Allah I have noticed anger and resentment on your faces. यानी he said कि मैं देख सकता हूँ कि आप गुस्सा हो या आप नाराज हो इस बात से, बट आपको अपने आप पर ही गुस्सा होना चाहिए, उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु से नहीं. जब हमारे नेशन को कॉल ऑफ ट्रूथ का जब मैसेज मिला था, आपको भी मिला था, लेकिन ये लोगों ने, ये बेचारे पुअर लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और आप लोग जो थे उसको रिजेक्ट किए और इसीलिए आप उनके पीछे हो. आपको सॉरी फील करना चाहिए कि आप ब्लेसिंग्स जो आपको इमीडिएटली लेना चाहिए था, ईमान की जो चांस था आपको उस रास्ते पे आने का, आपने उससे फ़ायदा नहीं उठाया. बट ये पुअर पीपल जो है ये आपसे आगे पहुंच गए, इन्होंने जल्दी इस मैसेज को एक्सेप्ट किया, इसीलिए आप इनके पीछे हो. O people, you are aware of what advantages this poor people have over you that enable them to go ahead of you. By Allah, it is only possible for you to come close to their degree of excellence if you commit strongly to jihad. यानी अगर आप कोशिश करें
कि बहुत सच्चे दिल से जिहाद के लिए अगर आप तैयार हो in the way of Allah and hope that Allah Azza wa Jal bless you with shahadat, फिर जाकर कहीं आप इनके करीब आओगे. Suhail ibn Umar then brushed his clothes and walked away. Umar favored Bilal and other people like him over the leaders of the Quraysh because of their early association with Islam. It was because of the real standard of esteem in Islam is the degree to which one is obedient. बहुत important point है यहाँ पर कि इस्लाम में किसकी दर्जात होते हैं. Is it based on your wealth, on your nobility, आपके हसब नसब, आपकी खूबसूरती, आपकी जायदाद? नहीं. It is related to one who is obedient to Allah Azza wa Jal. यानी अगर आप सोचें कि आपके दर्जात अल्लाह की नज़र में बुलंद हो तो उसका एक ही फॉर्मूला है, अतात, obedient, being obedient to Allah Azza wa Jal and following the way of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. इस किस्से के अंदर वो टिप है हमारे लिए. How can we raise our darajat? By being obedient to Allah Azza wa Jal and following the footsteps of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beautiful. Now, Umar radiallahu anhu's love for the Hasnain. Umar would treat the Hasnain with great love, affection and respect. When he allocated stipends for those, ये हमने देख लिया कि उनको जो stipends था, बड़ों को जो मिल रहा था, जो बदर में, जंग बदर में जिन्होंने हिस्सा लिया था, वो इनको भी मिल रहा था. Once he said to Hussein, why don't you come pay me a visit sometime, son? Thus Hussein went to see him one day. He reports that Umar was busy talking to Muawiyah regarding some important matters. When he visited him, Umar's own son Abdullah ibn Umar was waiting because he had not been granted permission to meet him. Yet Hussein narrates that he thought that if Abdullah did not get permission, how could he be given permission? So he returned home. When he met Umar after some time, the latter asked why the former did not come to visit him. And he replied that Abdullah was waiting, so I decided to return. Upon which Umar said, you deserve to meet me more than my son. And then he put his hand on his head and said, the crown of honor that we wear is a blessing from Allah Azza wa Jal and a blessing due to the messenger's family. यानी उनकी फैमिली को हर खलीफा जो उसके वक्त में मौजूद थे, they used to have a very different kind of ehtaram and different kind of approach towards them. Such was the amount of love that rightly guided caliphs reserved for the house of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Members of the messenger's family are worthy of love and respect, not just because they are related to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but because they also possess those qualities and characteristics. I remind you to fear Allah as regards with the rights of my family members were the words of Muhammad sallallahu alaihi wasallam that he repeated. A word of caution. Muslims should, however, refrain from committing excess in this regard. जैसे हमने इस बारे में अच्छा डिस्कस किया कि किसी भी चीज़ में exaggeration नहीं होना चाहिए. Because as we have learned in the Aqidah sessions also, that exaggeration leads to shirk. Similarly, it pertains to Muhammad sallallahu alaihi wasallam's family as well. It is similarly not benefiting that the grandsons of the Messenger sallallahu alaihi wasallam are glorified above the Messenger sallallahu alaihi wasallam himself. Excessive reverence is as bad as disrespect. यानी ज़्यादा उनके लिए एहतराम करना is equivalent to being disrespectful. So both are undue extremes, and undue extremes are definitely a big no. The status of the grandchildren of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and other members of his family is moreover not in need of unauthentic fables. यानी झूठी मनगढ़ंत कहानियों की कोई ज़रूरत नहीं है. Unauthentic accounts hardly add to the respect and love that is bestowed on them by authentic accounts. यानी जो genuine सही हदीसें हैं, किस्से हैं, वही काफ़ी हैं और किसी additional मिर्ची मसाले की ज़रूरत नहीं. Mohsin ibn Ali. 3 or 4 years after Fatima radiallahu anha got married to Ali, she gave birth to her third son, who may have been named Herb by Ali, but Mohsin by Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Mohsin died early in his childhood. It is rarely discussed in historical and biographical works, but just for our information, Mohsin ibn Ali was one of the sons of Fatima radiallahu anhu and Fatima radiallahu anha and Ali radiallahu anhu. Zainab bint Ali. Fatima gave birth to a baby girl who was named Zainab in 5th Hijri. Like her brother, Zainab received much love and attention from Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Even though she was pampered by her mother and grandfather, she was brought up as a brave and a truthful young woman.
Her life experiences helped her grow in maturity. She lost her mother and grandfather when she was very young. After Fatima's death, Umama bint Abi al-As, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's granddaughter and Zainab's daughter, was married to Ali, and Uthman bint Abi al-As and Zainab bint Ali got very well. तो उनकी दूसरी जो बेटी थी फातिमा की रदी अल्लाह अन्हा की, उसका नाम था जैनब। वो भी बहुत ज़्यादा लव अटेंशन में और अपनी मॉम के साथ पैम्पर्ड हुई थी। ग्रैंडफादर ने भी बहुत लाड़ प्यार से उसको पाला। एंड देन माशाल्लाह वो ब्रेव एंड ट्रूथफुल यंग वुमन बनी, काफ़ी मैच्योर हो गई। जिनके पेरेंट्स आपको पता है खासतौर से मदर पास आउट हो जाती है बहुत अर्ली एज में, तो वो एक अलग मेच्योरिटी पे बच्चे पहुंच जाते हैं। एंड after Fatima radiallahu anha's death, Umama bint Abi al-As, Muhammad sallallahu alaihi wasallam's granddaughter and Zainab's daughter, was married to Ali. Umama bint Abi al-As and Zainab bint Ali got very well. Yani she was married to Umama bint Abi al-As. Zainab's marriage. Ali married his daughter Zainab to his nephew Abdullah ibn Ja'far. After she got married, she gave birth to 4 sons, Ali, Aun, Abbas, and Muhammad, and a daughter who was named Kulsum after her aunt. Zainab was an intelligent and wise woman. She was highly observant of the compulsory prayers and fasting. She regularly offered tahajjud prayers. I'm reading this out, ye hamare liye tips hain, and did not miss them even when the tragedy of Karbala occurred. God blessed her with many praiseworthy attributes. She was remarkably generous and marvelously eloquent. She accompanied her brother Hussein to the battlefield of Karbala, where she witnessed the tragedy firsthand but bore it patiently. So Zainab jo hai, Hassan Hussain ki sister, that is what we're talking about. Compulsory prayers or fasting ke alawa, regular in tahajjud, something that Allah Ta'ala make us among those. And then she even, such a battle of Karbala was such a greatest tragedy in the Islamic history. She experienced that first hand. वो battlefield में भी गई थी, उन्होंने first hand ये सब कुछ देखा था, experience किया था. Even then she bore it patiently, सब्र के साथ, और अपनी उस दौरान भी तहज्जुद उन्होंने तर्क नहीं की. Kulsum bint Ali, another sister of Zainab. In 6th Hijri, Fatima gave birth to another baby girl who was named Kulsum. The sweetheart of Ali and sister of the Hasnain, received much love from Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and her grandfather. She witnessed the loss of her mother at a very young age. However, after the death of Fatima, Ali married Umama bint Abi al-As. Umama's addition to the family was a good development. She took good care of Zainab and Kulsum and brought life back to the household. And we all read about it, that after Fatima radiallahu anha, Umama was married to radiallahu anhu, Ali radiallahu anhu, and she took care of the girls very well. Kulsum's marriage to Umar. Kulsum was 11 years old when Umar ibn Khattab proposed to marry her. Ali replied that he thought he would marry his daughters to his nephews, the sons of Jafar ibn Abi Talib. Umar nonetheless insisted on his proposal and expressed his desire to be related to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani you can see how beautiful it is. Umar ibn Khattab wanted to be connected to Messenger sallallahu alaihi wasallam's family. So he proposed marrying Kulsum. She was 11 years old. And then Ali radiallahu anhu wanted to marry his daughter to, वो अपने nephews के साथ उनकी शादी करना चाहते थे, but Umar radiallahu anhu insisted. So what happened? He said he had heard the Messenger of Sallallahu Alaihi Wasallam saying that all kinds of relationship shall cease to exist on the day of judgment except those with Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Upon which Ali agreed to marry Kulsum to Umar, and Umar radiallahu anhu paid 40,000 dirhams as a mahar to Kulsum. Good amount, huh? After the marriage, Umar invited the migrant members of the Muslim community. Fellow Muslims congratulated him and inquired whom he had married. He replied that he had married Kulsum, the daughter of Ali radiallahu anhu, and went on to narrate to them what he had heard from the Messenger sallallahu alaihi wasallam, that all relationship will cease to exist on the day of judgment except those with Muhammad sallallahu alaihi wasallam. यानी सारे relationship जो है वो it will cease to exist on the day of आखिरा except जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बने हों. And how was his relationship with Kulsum? They got along very well. One day when Umar called Kulsum, he found that she was weeping. एक बार उन्होंने he found out that Kulsum is weeping. वो रो रही हैं. She told him that the Jew Ka'b ibn Ahbar said Umar was at one of the gates of hellfire. Umar said to her that
it was all right if that was God will, but that he hoped to be better off. Umar summoned Ka'b and asked him what he had said about him. Ka'b swore to God and said, by the one in whose hand is my life, we see you at one of the gates of hellfire, and you try to protect them from hellfire. After you, a lot more people will be admitted to hellfire. यानी ये एक ज्यू था, उसने एक ऐसी बात कही थी कि उसने देखा उमर रदियल्लाहु अन्हु को एट वन ऑफ द गेट्स ऑफ हेलफायर. ये सुनकर कुलसुम रोने लगी. जब उमर रदियल्लाहु अन्हु ने काब से पूछा कि क्या आपने बात कही, तो उसने कसम खा के कहा कि we see you at one of the gates of hellfire and you try to protect them from hellfire. After you, a lot more people will be admitted to hellfire. But उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है, उन्होंने कैसे कंसोल किया कुलसुम को? उन्होंने कहा कि अगर ये अल्लाह की मर्जी है then we should be thinking about it. लेकिन अगर कोई कुछ, and especially somebody, just any layman is talking anything about like this, we should not worry. But imagine this, why this incident has been mentioned here, to show us the realistic things in life. Yani if we hear something bad or something like that, even though sometimes we know कि उसकी कोई weightage नहीं है, but human emotions flow. Females feel, females are sensitive, so they cry. So she cried, and how he consoled her rightly. That is the reason, that is the point we pick from here and nothing else. Kulsum's offspring. Sometime after her marriage, she gave birth to a son who was named Zaid and a daughter who was named Ruqayya. So they had 2 children. After the assassination of Umar ibn Khattab radiallahu anhu, Ali married Kulsum to her cousin Aun ibn Jafar. After Aun died, she got married to his brother Muhammad ibn Jafar. After Muhammad died, she married Abdullah ibn Jafar. She died while she was married to Abdullah. So almost 3-4 marriages का जिक्र है यहाँ पर. So जब she became a widow, I told you it was a culture. They never used to leave them alone. She was married to 3 more men. And after that, she died when she was married to Abdullah ibn Jafar. One night, Kulsum's son Zaid was trying to broke a peace deal among the Banu Adi. He was attacked in the dark by someone who was not happy with what he was trying to achieve. Zaid could not survive the injuries and died. When his mother Kulsum learned about his demise, she could not bear the news and died after falling unconscious for a short while. So what was the reason for her death? उनका बेटा जो था वो एक peace treaty kind of a thing deal strike करने की कोशिश कर रहे थे. और आपको पता है कई बार दुश्मन बहुत होते हैं, एंड इनके तो काफी ज्यादा थे, ये फैमिली के पूरे. तो इनके दुश्मन जिनको ये पीस ट्रीटी पसंद नहीं थी, वो आकर उन्होंने अटैक किया जैद को, एंड ही कुड नॉट सस्टेन द इंजरीज, ही डाइड. ये खबर सुन के गम के मारे वो बेहोश हुई और फिर शी ऑल्सो डाइड. Upon Hassan's request, Abdullah ibn Umar led the funeral prayers for Zaid ibn Umar and Kulsum bint Ali, both of whom were buried at the same time. May Allah be pleased with all of them. And that is where we end our session of golden stories of Khadija radiallahu anha, Ummul Mu'minin. And Alhamdulillah, we will begin with Aqidah level number 2 inshallah soon from tomorrow. And we'll keep it at the same time, 2 o'clock. For those who have attended level 1, highly recommended. For those who have not attended level 1, we will be repeating on each subject a recap karenge inshallah. So it will be a reminder for us. And I would urge all of you to definitely be a part of this Aqidah level 2. We will be recording inshallah, but it's nice to be there. Any questions? It's an open forum. Jazakallah khair. Wayakum. Okay. I don't see any raise of hands. Inshallah, then we will meet tomorrow. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.